lovely beautiful people. I hope you all are doing great. Thank you so much for your love and support. And if you're new to my channel and if you haven't subscribed yet, be a part of my YouTube family and join us. And kindly subscribe if you consider it. Thank you. Okay, so it was early in the morning and it was Saturday. The weather was quite good. It was amazing, and my husband went for the grocery. He asked if we can go, but I just woke up, me and Faris, and I wasn't feeling well, so I was like, okay, you go ahead and do the grocery, and then meanwhile I will have my breakfast and I will get the kids ready because we had a plan to go to the mall near to our place where we live. So he had a grocery, he came back, and we went to the mall because we finally made to a salon that I always say that it's a really hard to find somebody who can give your kids a haircut. क्योंकि जब ज़रूर पैदा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का तो वो होता है सीन कि हमने इनके विदिन 7 days जो है वो बच्चों के बाल काटने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे बच्चे के वो नहीं करते. So we really had a hard time. So my husband did a haircut to my son. Actually, he used his own razor, which was quite difficult for us, and since then till now, he was giving him a cut at home and his hair was like so messy, so ugly, and I was like, कोई तो होगा यहाँ पे सलोन जो कि देता होगा बच्चों का हेयर कट. हमने बहुत जगह पे ट्राई किया, बहुत जगह पे पूछा, एंड दे ऑलवेज लाइक कि नो वी आर नर्वस, वी कांट डू दिस, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, सो दे आर स्कैर्ड कि वो बच्चों को कहीं कोई कट ना लग जाए. सो दे वर लाइक इतने छोटे बच्चे को नहीं देते, लाइक दे डू व्हेन दे टर्न टू समहाउ 4-5 years. So this is the one we found in Bori Mall, and actually they have all the their outlets in all other malls in Bratislava, in Irvia, and Central, and in many other places. So but we had to wait because they were like, you have to go and you have to wait for your turn. So there were like 2-3 people in a queue. So उसके बिल्कुल opposite ये एक outlet था Gate, और मैंने फिर इनसे कहा कि आप यहाँ पर वेट करें and I'll just quickly go and check if there's something. So of course as I always say कि यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट लगा रहता है all year long. जो उनके स्पेशल डेज होते हैं, like the Christmas is gonna come, so they're just definitely gonna have a huge discount and everything. लेकिन इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे पूरा साल ही ऑलमोस्ट जो है वो ऑफ रहता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे होता है. Okay, so I was just checking some shirts and some dresses because as I just put on so much weight after Faris. I'm still trying to lose some, but it's really getting on my nerves now because nothing fits me, and I really don't want to buy so much of the stuff जो कि मुझे बाद में फिर weight lose करने पे पूरा नहीं आएगा. So I don't usually buy now for the clothing or the shoes because I know my size went up a little bit, not too much. So I just buy things if I'm really in need, or if I see that's a really good discount, or if something is really cool, then I definitely be buying it. So there were so many cute shirts. They were like starting from €2 to €5, which is like amazing if you get it on the this outlet on Gate, which is was quite good. So I just purchased I would say maybe one red t-shirt and a cap because my cap was pretty old, and I was like, okay, the winter is around the corner, so I'm needing it. So yeah, I just bought the shirt and a cap, and there were so many other cute bags and shoes, and these sandals were so pretty, and the other stuff too. But as I said, I was looking for something in fact for my husband, but he didn't find anything that could fit him.
Okay, so he just called me that it's his turn because he was waiting for so long, I would say. So he was quite tired because it's somehow really tiring holding Faris this way. So he was like, I will sit down for a while so you will take this room inside. So Zaroon was actually really excited. I wasn't expecting him to be, but he was very excited for getting his haircut. So the lady was actually quite nice there. She actually gave me a haircut, I would say maybe 2 years ago, when Zaroon was about to be born. I was expecting him, so I was like, okay, I need a change. So she gave me the haircut and I just visited her after 2 years, so she was quite happy seeing me again. So yeah, but he was moving a lot and I had to help her holding his head. He was quite fascinated with the tools she was using. Yeah, he looked really cool. पहले 2 दिन तो हमें जो है वो बड़ा अजीब ही लगता रहा इसको देख के because we were used to seeing him like in a long hair. So but he's looking really cute now. Yeah, but the lady was actually quite nervous. She was by using those electric razors, she was so nervous that maybe she's gonna cut him, but somehow she managed. Of course, she's professional, she's doing it for I don't know how many years. So she just quickly gave him a cut. बिल्कुल भी possible नहीं होता हम अगर इसको घर में कर रहे होते. It takes us like I don't know hours and hours. और फिर भी मेरे हस्बैंड जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन इसके जो है ना वो इधर उधर से बाल काट के उसको ठीक कर रहे होते थे कि यहाँ से सही नहीं हुआ, यहाँ से सही नहीं हुआ. Yeah, it was quite fun, but we are glad that finally we have somebody who can help us. So here is the grocery जो husband लेके आए थे सुबह morning में. I just told him to keep it on the table because I had to wipe the fridge. क्योंकि weekend था और weekend पे मैं अपने fridge को wipe up करती होती हूँ उसको. I didn't do the freezer part because freezer part को मैं तभी करती हूँ जब मुझे मैं उसकी grocery करके लाती हूँ अलग से उसका जो meat वगैरह है या जो frozen vegetables या frozen fruits वगैरह होते हैं. So we had a stock already. So मैंने जो ऊपर वाला इसका जो पोर्शन था उसको ही मैंने क्लीन अप किया था क्योंकि पूरा हफ्ता वो चीज़ें जो है वो समटाइम्स वी कैंट मैनेज कि उनको प्रॉपर डिब्बे के अंदर डाल के उस तरह से रखा जाए. समटाइम्स ही जस्ट अगर मैं बिज़ी हूँ फारिस से उनके साथ तो वैसे ही बर्तन उठा के फ्रिज में रख देते हैं पूरे के पूरे ही और उसकी वजह से ना काफ़ी मैसी हो जाती है फ्रिज अंदर से. सो बट आई सम हाउ कैन मैनेज एट लीस्ट एट द वीकेंड्स वो बच्चों को होल्ड कर लेते हैं और फिर मैं जो है वो जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ. So but then he came to the kitchen and he was like I'm gonna have vitamin C thanks to our company जो कि हम लोगों को जो है वो खैर ये तब के पड़े हुए हैं हमारे पास when we used to go to the office. अब तो वैसे ही home office होता है तो they were getting expired and he was like चलो इनको ख़त्म ही कर दें ऐसे ही पी के. So he had one for himself and he made one for me. I was like okay, let's have some vitamin C before getting into the deep cleaning of the fridge. So here you see it gets really messy by the end of the week. हर चीज़ जो है वो उल्ट पलट हुई भी होती है इधर उधर गई भी होती है. So I check if something is getting expired और कुछ leftovers जो होते हैं उनको भी मैं साइड में करती हूँ. जो नई चीज़ें होती हैं उनको ऐड करती हूँ. So ऐसे ही जो भी you see the lemon is finished but it's still in the fridge. उसको स्क्वीज़ कर लिया वह सारे का सारा उसमें से जूस निकाल दिया लेकिन फिर भी instead of throwing it away he just put it in the fridge. That's how the men somehow handle the things. और उनको ये था कि शायद इसमें से अभी कुछ और निकल आए. खैर I just cleaned up this sink very well because I'm gonna wash vegetables and fruits क्योंकि मैं ऐसे कभी भी अपने फ्रिज में वो नहीं रखती. हालांकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत क्लीन होती है बहुत वो साफ़ सुथरी उस तरह से होती है लेकिन फिर भी आई थिंक कि वो कोई ना कोई केमिकल्स वगैरह कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड करते ही होंगे फ्रूट्स के ऊपर जिसकी वजह से जो है वो फ्रेश रहें और इस तरह से. आई एम नॉट श्योर इट्स जस्ट समथिंग दैट दैट्स माय ऑब्जर्वेशन. सो मैंने फ्रूट्स को जो है वो पहले मैंने सिंक अच्छे से साफ़ किया था क्योंकि डेफिनेटली उसमें जब बर्तन वगैरह होते हैं तो उसके रेजिड्यूज़ होते हैं अंदर. सो उनको मैंने क्लीन किया उसके बाद मैंने जो है वो फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके उसको जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर उसको ड्राई कर लूँगी थोड़ा
और उसके साथ ही मैंने जो है वो वेजिटेबल्स भी ऐसे ही वॉश करके तो उनको मैंने ड्राई कर लिया था। And sorry for being late. I know I should have uploaded this video on the weekend already, but I couldn't manage because I wasn't feeling well, और दूसरा मैं ज़रूर फारिस की वजह से मैनेज ही नहीं कर पा रही थी. They were taking so much time to go to the bed, and after that I was like so tired, और मैं भी साथ ही सो जाती थी. So that's why I couldn't manage. So yeah, I just wiped down the baskets जो कि मैं आलू और जो होते हैं प्याज उनके लिए यूज़ करती हूँ, उनको भी मैं एक दफ़ा क्लीन इस तरह से वाइप अप कर लेती हूँ. और यहाँ पे भी मैंने फिर जो क्लीनिंग स्प्रे है उसके साथ उसको फ्रिज को वाइप अप किया, उसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको करके, और सारी चीज़ें जो है वो मैंने उनको वापस वैसे ही अंदर जैसे यूजुअली मैं अपना मैनेज करती हूँ उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वैसे कर लिया था. एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड हैबिट. इंस्टेड ऑफ यू वेट फॉर सो लॉन्ग, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद, महीने बाद अगर आप उसको साफ़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और फिर बच्चों के साथ भी इस तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप जो है वो उसको टाइम टू टाइम जब थोड़ी बहुत उस तरह से होती है उसको एक क्विक वाइप अप दे दिया करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. And I hope my videos will inspire you and motivate you in some way to stay organized, eat clean and healthy, and stay happy and enjoy the life as much as we can. I know life is too short, and I don't know who are those people जिनके पास इतना टाइम होता है कि जो है ना वो अपने आप को बेटर करने की बजाय, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की बजाय, आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है विद इन योर सोर्सेज, विद इन योर कैपेसिटी, विद इन योर लिमिट्स, आई थिंक यू शुड एंजॉय एज मच एज यू कैन. आप कभी भी किसी के हिस्से की खुशी, किसी के हिस्से का रिस्क, किसी के हिस्से के जो सारे मामलात हैं वो नहीं ले सकते. यू विल हैव व्हाट अल्लाह इज़ गोइंग टू गिव यू. सो जो कुछ भी आपके पास है आई थिंक आपको उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहिए. हर किसी को, मैं ये नहीं कि किसी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही हूँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई एम सेइंग इन जनरल कि हमें जो है हमारी कैपेसिटी के अंदर हमें ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, हमें चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करके ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए. इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से उसके पास आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, उसने क्या पहना है, उसने क्या खाया है. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ. वी शुड ऑलवेज सी समथिंग पॉजिटिव. अगर कोई कुछ कर रहा है सो वी शुड सी व्हाट्स पॉजिटिव इन इट, एंड वी शुड समहाउ गेट इंस्पायर्ड, एंड वी शुड इम्प्लीमेंट दैट समथिंग. अगर कुछ अच्छा है, कुछ आपको इंस्पायर कर रहा है, सो वी शुड अडॉप्ट दैट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट. इसमें कोई बुरी बात नहीं है. वी शुड, बिकॉज वी ऑल नीड मोटिवेशन एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स. सो आई डू वॉच सो मैनी यूट्यूब वीडियोज़, tons of YouTube videos about somebody doing some home decor, somebody who's having so many kids and they're keeping their home organized, somebody who is having so many kids keeping their home organized, as well as they're traveling, they're enjoying their life, they're cooking healthy, they're eating healthy. इसमें वो नहीं है कि यार आपके पास वो, मेरे पास उस फलां बंदे के पास इतने सोर्सेज हैं इस वजह से वो ये कर रहा है, मैं नहीं कर सकता. ऐसे नहीं है. यू स्टिल कैन एंजॉय विद इन योर लिमिट्स, विद इन योर कैपेसिटी, इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो इंस्टेड ऑफ इन्वेइंग समबडी, आप किसी को इन्वे करो, आप किसी को जो है वो जलस हो, हसद हो करके वो उससे कुछ भी नहीं मिलना. आप अपने जो है वो अंदर एक नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, और वही नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप अपने बच्चों में, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें एज फ्रस्ट्रेशन के तौर पे निकाल रहे होते हैं. तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ. So you should watch people around what they are doing. That's completely okay, but if they are doing something great, you should get inspired, I think, and you should adopt it. There is nothing wrong. I do adopt. मैं बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये एक पॉजिटिव साइड है, इससे अच्छा इफेक्ट आ रहा है किसी की लाइफ के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, सो आई शुड अडॉप्ट दिस हैबिट टू.
somehow, because मैं समझती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें करने वाली हैं ये सिर्फ औरतों की नहीं होती, मर्दों की भी होती हैं. They should learn to be organized, to be clean, to be tidy. They should enjoy their lives too. They should help their wives, they should help their kids around too. I mean, ये वो नहीं है कि आप बस ये औरतों का फ़र्ज़ है, ये औरतों का काम है. They should do it, and women should do help their husbands, their men, and financially if they can. सो मेरे ख्याल से ये लाइफ जो है वो इसी तरह से है कि आप दोनों लोग जो हैं वो मिल के अपनी ज़िंदगी को हर तरह से जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को ये बताएं कि तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है और तुम्हारा क्या वो है, तुम्हारा क्या नहीं. आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव माई हस्बैंड इन माई लाइफ बिकॉज ही हेल्प्स मी अ लॉट, टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स, even in cleaning homes, even when we go out. You have seen him in with my videos as well, maybe if you have noticed or not, but he helps me a lot. और बिलीव मी, इससे हमारी ज़िंदगी आसान होगी, हमारे बच्चे इससे अच्छा सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी आसान होगी. बिकॉज आई वांट माई किड्स टू बी लाइक देयर डैड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी वाइफ्स को कल को जब उनकी शादी हो तो वो उनके साथ किसी तरह से जो है वो कोऑपरेट करें, बजाय इसके कि उसको बताएं कि आई एम अ मैन एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड डू एंड यू शुड डू एंड ब्ला ब्ला ब्ला. खैर एनीवे, बहुत सीरियस बात हो गई है ये. आई जस्ट organized everything back in, and then I felt a bit hungry, and I made the toast for myself, the same that I usually make. I added added cheese on it, and half fried egg, and this radish, and I added a pinch of salt and what you call it, chili sauce. Yeah, and now I'm gonna have a cup of coffee without sugar, of course. So इतना सा खाने से आप मोटे नहीं होंगे. आई नो आई हैव स्किप्ड द रोटी, बट आई समटाइम टेक दिस ब्राउन ब्रेड टोस्ट समटाइम्स. जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, आई फील लाइक ओके इट्स गोना टेक सो मच टाइम फॉर मी बॉइलिंग एग्स एंड देन वेट, सो आई जस्ट क्विकली टेक दिस टोस्ट एंड इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशंस, इट्स सो गुड. सो अगर आप इसके 2 से 3 टोस्ट एक दफ़ा पे खा लेते हो, दैट्स नॉट गुड. You have to take care of your portion size as well. So just eat उतना ही जितना कि आपको लग रहा है कि आपकी टमी जो है वो फुल है, आप सेटिस्फाइड हो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको ठूंसी जाओ 2 3 4 बना के टोस्ट के भी. it's tasting so well, so I'm gonna have all of it. So just controlling your portion size and skipping some of bad carbs, drinking so much of water, having a cup of coffee a day. Well, I sometimes take 2 3, sometimes 4 cups. It depends when I am so stressed because of what is, because when I just can't sleep enough. So just to wake myself up, I just try to somehow do it. So yeah, it helped me, this regime helped me to lose around 7 to 8 kgs, and I'm definitely gonna continue with it until I'm gonna go to 60, because right now I am on 70, because I lost 3 kg more, which I am so proud of myself. But yeah, and those who are breastfeeding mothers, it does not affect by any means your milk production, of course, because you are still eating healthy. It's just you have controlled your portion size, and चावल और रोटी से ही जो है वो नहीं सारा सिस्टम आपका चलता. सो यहाँ पे मैं ज़रूर उनको जो है वो पफ पेस्ट्री बना के देने लगी हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू मेक समथिंग फॉर हिम, क्योंकि जब वो कुछ इस तरह से नहीं खा रहा होता तो फिर मैं क्विकली उसको इस तरह से कुछ ना कुछ बना के देती हूँ, ताकि कुछ ना कुछ उसके अंदर जाए. तो जब एक दफ़ा जब वो खाना शुरू होता है तो माशाल्लाह से फिर वो उसको दिल करता है कि मुझे जो है ना वो और दो, लेकिन आई हैव टू मेक सम स्टार्टर्स फॉर हिम. So I made this puff pastry. So again, you can make it savory, you can make it salty. I used here Nutella, and I added some frozen berries on top of it, and I baked it around 180 degrees for around 12 to 15 minutes. और इसमें मैंने जो है इसको डिफरेंट शेप्स दी थी. इसमें ये जो मैंने कट की थी, इसमें न्यूटेला और जो है बेरीज थी, और इसके ऊपर मैंने जो इसको एग वॉश करके तो उसको मैंने बेक होने रख दिया था, और साथ ही जो बाकी की पेस्ट्री बची थी उनको भी मैंने जो है वो डिफरेंट फिलिंग्स के साथ फिल कर लिया था. सो इट टेक्स मैक्सिमम 15 to 18 मिनट्स. अगर आपके पास बड़ी ट्रे है तो आप सारे डिफरेंट फ्लेवर जो है एक ही दफ़ा बना के एक ही दफ़ा बेक कर लें,
So it's a very good idea for for your kids, and if you have your guest comings and if you don't have much time, आपके फ्रिज में पफ पेस्ट्री पड़ी है, उसको निकालें फटाफट से। इसको जितनी देर में आपकी चाय बन रही होती है, साथ में उतनी देर में आपका ये भी जो है वो रेडी हो जाता है। सो इट्स गुड कि आप फ्रेशली जो है वो घर में बनाएं। तो इसमें फिर मैंने उसको जो है वो ये कैरामल चॉकलेट थी, चॉकलेट के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी कैरामल की फिलिंग थी, तो वो उसको मैंने वो करके तो फोक के साथ उसको इस तरह से उसके ऊपर पैटर्न्स बना के तो ये बना दिए थे। और एक मैंने उसको जो है वो सॉल्टी बना के दिया था इसको कट करके, और इसके ऊपर मोज़रेला जो चीज़ है वो मैंने ऐड करके इसकी चीज़ स्टिक्स जो है वो बना दी थी इसको। So he really enjoyed. He just finished. So I'm gonna definitely make another batch. So sometimes मैं उसको puff pastry से बना देती हूँ. Sometimes I make a regular dough and make him those cinnamon buns or cinnamon rolls, whatever you call them. और समटाइम्स जो है मैं उसको क्रॉसॉन्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो बना के उसके लिए रख देती हूँ। समटाइम्स केक, ताकि अगर वो जब नहीं प्रॉपर उस तरह से खाना खा रहा होता तो एटलीस्ट इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो शौक़ से खा लेता है। पर आई डू फील के उसको ऑल टाइम ये नहीं खाना चाहिए, बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी वो जो है उसको प्रोटीन्स और जो है मीट और एग्स एनीवेज एग्स ही लाइक्स, एग्स वो खा लेता होता है। उसको मैं पराठा रोल टाइप बना के देती हूँ, ऊपर अंडा लगा के, तो वो खा लेता है। सो हियर इट्स ऑल डन. So that's it for today. I hope you enjoyed this video. If you did, give it a thumbs up. Do leave a comment below. Get in touch with me on my Instagram page. Don't forget to subscribe, like, share with your friends and family. I'll definitely see you in the next one. And here you see is our dinner, because it was Saturday, and of course we had to have kebab. Well, not always we have kebab, it's like really rare, but most of the time whenever he goes out he buys these kebab, and we definitely like to have some because Zaroon loves this chicken, and this is the only way we can feed him chicken. Otherwise there is no way he can have some. So that's it. Take very good care of yourself and people around you, and I'll see you in the next one. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.